So we have done one question related to provision for doubtful debt in the previous class, and I think the question which I have given you for homework as well, that also included provision for doubtful debt. If you're not able to solve that question or having any difficulty, so we'll look at that in the next class. Uh, there are certain questions which may come for 6 mark in your school exam or in your class test related to provision for doubtful debt, where they will ask you like how the treatment will be made for provision for doubtful debt and how will you show it in the financial statements. So it will not be a big question where you have to make trading account, profit and loss account, and balance sheet. You just need to make an extract of profit and loss account, extract of balance sheet, where they will just ask you to show the adjustment of provision for doubtful debt in respective account. So we'll see different cases related to it, and how do you have to solve or how do you have to go forward. Okay, so just write the question first. So case number one. So you have been provided with a trial balance in which debtors are given 1,05,000, bad debts 2,000, provision for doubtful debt 4,000. So what these things mean? First of all, the bad debt. So if the bad debt is given inside the trial balance, that means what? Debtors are already deducted. Debtors are already reduced with this bad debt. Okay. And this provision for doubtful debt, this provision for doubtful debt is the provision which you have made in the previous year, which will be used if the situation comes, it will be used in the current year. Then, apart from this, additional information or adjustment. The first adjustment is further bad debt is provided to you rupees 5,000. Then they are asking you to create a provision on doubtful debt at the rate 10% on debtors. So what all you have to do? First thing they will ask you to calculate amount to be debited to profit and loss account. Second, they can ask you pass journal entries related to this. Okay. And third, prepare necessary ledger. Fourth, show extract of profit and loss and balance sheet. So these type of questions they can ask you. Okay. Apart from the big question which we have done in the previous class,
We have done 3 questions in class. So apart from those questions, we will continue to do those questions, but they can ask you small questions like this. And even this can come for a 6 mark. Okay, it's a big enough question to be there in your exams for 6 mark. Okay, so how to proceed with this? So in the previous class, I have made you written a formula to calculate what will go in profit and loss account related to bad debt and related to provision. So let's recap that formula. So first, what do? We take bad debt given in the trial balance. So bad debt given in the trial balance are 2000. So we'll take this, add further bad debt. Further bad debt will always be given to you in the adjustments. So it is given as 5000. So this is the total expense related to bad debt which should appear in the profit and loss account. Okay, this is the total expense related to bad debt which should appear in profit and loss account. Now, apart from this, they have also asked you to create a provision on doubtful debt, that is 10%, and provision is also an expense. So that will also appear in profit and loss account. So we will also calculate the provision and we'll add it here. So basically we are putting all the expenses together first, related to the bad debt and related to the provision. So next step, we have to calculate the provision which they have asked us in the question, that is 10% on debtors. Now provision is always created on the doubtful debt. We have debtors given to us in the question as 1,05,000. 2,000, the bad debt, which is already given in the trial balance, it is deducted from debtors. We cannot deduct it again. It is already deducted. This 5,000, which is given in the additional information, it is not deducted from the debtors. So we have to calculate provision on doubtful debt. So the debtors which has become bad, we cannot calculate provision on them. So first we have to take the debtors given in the trial balance, 1,05,000. We subtract further bad debt from it, क्योंकि ये further bad debt कहाँ लिखा हुआ है? Adjustment में. So it's not deducted from the debtor. So we have to subtract them, because we can create provision on doubtful debt, not on those debt which has become bad. So 1 lakh are the net debtors. On these debtors, we will create a provision that is 10%. So into 10 by 100, so 10,000. This 10,000 will be called as new provision for doubtful debt. Okay, so अब ये हमारा expense है 7,000 और ये हमने expense create करा related to provision. So total expense related to bad debt, related to new provision that should appear in the profit and loss account on the debit side is 17,000. However, we have created a provision last year that will be used in the current year. So इसको use up करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो expense है वो कम हो जाएगा. So minus old PDD given in the trial balance, that is 4,000. So this positive 13,000 will appear in the profit and loss account on the debit side. Guys, anyone, any issue? Are you able to understand this? Yes, sir. Okay. Yes, so sir. how do we have to show this? So this is the first part of the question. So if I look at the question, calculate the amount to be debited to profit and loss account. So this is how you have to show, this is how you have to do. So this is the first part of the question. Okay. Now after this, let's do the fourth part.
They are saying show extract of the extract we have to show of P&L account and balance sheet. So basically how this will appear in the profit and loss account, this will appear in the balance sheet. Let's do that first, because when you will do the big question, so you are making profit and loss and balance sheet, तो वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए. So I'll make a rough sketch of profit and loss account here. So since this is coming out to be positive, we know that this will appear on the debit side of profit and loss. So debit side, and how we are going to write the things. We'll take bad debt given in the trial balance. So sorry. In the inner column, we'll write 2000, then plus further bad debt 5000, then plus new provision for doubtful debt, that is 10,000, minus old provision for doubtful debt, which was given in the trial balance as 4,000. And in the outer column, you will write 13,000. So this is how you have to show the treatment of bad debt and provision for doubtful debt in the profit and loss account. Now, what all will go in the balance sheet? Balance sheet, always two things will be subtracted from debtors. First, you will take the debtors given in the trial balance. The first thing which you will subtract will be further bad debts, not the bad debts given in the trial balance, because bad debt which are given in the trial balance, they are already subtracted. So you will take further bad debt 5,000, you will subtract that, and then minus new provision for doubtful debt. That will be 10,000. So in the outer column, we'll write 90,000. Okay, guys, anyone, any doubt with the second part? Sir, can you explain the last part again? Balance sheet. Balance sheet, na? Okay, so from balance sheet, you have to deduct two things. One is the further bad debt. By further bad debt, I meant the bad debts which are given in the adjustments. The bad debts which are given in the adjustment, we have not treated them. We have not taken it in the account. We have not taken them in our books. So bad debt, we first debit. And what does bad debt do? Bad debt decrease our debtor. So bad debt account debit to debtors. The entry will be for this rupees 5,000. When I am debiting bad debt, that means what? I am creating an expense. So मैंने expense create करा तो P&L के debit side पे डाला. And bad debt is also reducing asset ना, तो जो उसका credit aspect है वो ये है. ठीक है? Provision is an expense. So the new provision which we created in the current year, that's an expense. We are decreasing our profits by this provision. We are creating it an expense. But we have to carry this 10 forward to the next year. And how we are going to do it? We are going to put it on the liability side. But when we show our accounts, we don't put it here. We subtract it from the debtors. So this 10,000 we have to subtract from the debtors. Clear? Got it. Okay. So this was the first and the fourth part which we have done. Now they are asking you to pass journal entries. So journal entries, it's logical, but you have to learn them. So for this type of question, in total, 3 journal entries will be there. The first entry, okay, first of all the entries will be done when? On 31st March. Because these adjustments are taking place when you are creating your financials. Financials are created for the year which is ending on 31st March. So please remember, whenever you are making a journal entry, it's going to be made on 31st March. So under the date column, you will write 31st March. Okay. So 31st March. And the first entry which we will do will be for this further bad debt. तो bad debt क्या करता है? Bad debt debtors को कम करता है ना. So ये जो further bad debt नीचे लिखा हुआ है, additional information में लिखा हुआ है, इसने debtors को कम नहीं करे. तो हमें अब क्या करना है? कम करना है. So bad debt account debit to debtors account 5,000. Okay, this is the first entry which you have to do. Then we are going to take all the bad debt. The one which is given in the trial balance, that is 2,000, and the one which is given in the additional information 5,000. So total कितना हो गया? 7,000 आपके total bad debt हो गए.
So you're going to take the entire bad debt and you will adjust it from provision for doubtful debt. So entry will be provision for doubtful debt account debit to bad debts account. Okay, you have to take the entire bad debt here, 2,000, which is given in the trial balance, plus 5,000, which is given in the additional information, so 7,000. So this is the second entry. And third entry will be profit and loss account debit to provision for doubtful debt account, and you will put this 13,000. 13,000, 13,000. So guys, these three general entries you have to remember. Guys, any confusion with this? No, sir. कंफ्यूजन होना चाहिए. देखो गाइस, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो प्रोविजन है ना, this is given in the trial balance as 4,000, not 7,000, and not more than 7,000. यहाँ पर आपको ये 4,000 given है. आप बेसिकली इस प्रोविजन को यूज करते हो to decrease this expense. To decrease this expense. So, you know, basically you can divide this journal entry in two parts. How? Provision for doubtful debt. ठीक है, ये देखो इसका क्रेडिट बैलेंस है ना, 4,000 यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रेडिट साइड पे दे रखा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, आप इसको यूज कर रहे हो. यू आर एक्चुअली राइटिंग ऑफ योर एक्सपेंस. बैड डेट क्या है? बैड डेट आपका एक्सपेंस है. एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है. आप तो इसको क्रेडिट करके जीरो बना रहे हो ना. 5,000 का एक्सपेंस आपने यहाँ पर डेबिट करा है, एंड जो 2,000 का एक्सपेंस है वो तो ऑलरेडी डेबिट हो रखा है यहाँ पर. ये देखो डेबिट बैलेंस, इट्स ऑलरेडी बीन डेबिट. सो टोटल एक्सपेंस यू हैव क्रिएटेड रिलेटेड टू बैड डेट इज 7,000. एंड जैसे ही आपने बैड डेट को क्रेडिट करा, वो एक्सपेंस तो जीरो हो गया, एंड यू डोंट हैव द प्रोविजन. ट्रायल बैलेंस में तो प्रोविजन आपको 4,000 दे रखी है. सो ऐसा ये यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है? सो बेसिकली इस एंट्री को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. आई हैव कंबाइंड इट अप. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, आई कैन राइट हियर 4,000. ओके, आई हैव ओनली 4,000 का प्रोविजन अवेलेबल विद मी, प्रीवियस ईयर का, जो मैं यूज कर सकता हूं. द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो मेरे पास नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैड डेट 7,000. And then this entry I can write it like this: profit and loss account debit to provision for doubtful debt 10,000. This is the new provision which we created, new PDD. So I can also write the answer like this. I can also write the answer like this. दोनों का जो net effect है वो same है. कैसे? You see, P&L यहाँ पर कितने से डेबिट हो रहा है? 3,000 से डेबिट हो रहा है. यहाँ पर P&L कितने से डेबिट हो रहा है? 10,000 से डेबिट हो रहा है. तो नेट इफेक्ट 13,000 ही है. हमने एक्चुअली क्या करा इस सिचुएशन में? हमने क्या करा इस सिचुएशन में? द एंटायर एक्सपेंस ऑफ द बैड डेट वी ट्रांसफर इट टू पीडीडी, एंड देन वी हैव टेकन अप दैट एडिशनल लॉस ऑफ पीडीडी हियर. वी हैव एक्यूमुलेटेड इट हियर. एंड यहां पर हमने क्या करा? यहां पर हम वो लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट क्लास में कि व्हाट डू वी डू विद पीडीडी. सो आई हैव 4,000 का पीडीडी, आई हैव यूज्ड दैट. मेरे पास तो 7,000 का बैड डेट है, तो मेरे पास सफिशिएंट पीडीडी नहीं है. तो सफिशिएंट अगर नहीं है तो 3,000 का एक्सपेंस बन गया, एंड एडिशनल 10,000 का मैंने न्यू पीडीडी क्रिएट करा, वो भी मेरा एक्सपेंस. सो टोटल पीएनएल के अंदर कितना जा रहा है? 10 + 3 13. सो ईदर वे यू कैन राइट इन योर एग्जाम, इट इज करेक्ट. गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ये समझने में. यू हैव टू प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. ओनली देन यू विल गेट अ हैंड ओवर इट. ओके, सो अभी जो मैंने यहां पर ये करा ना,
this scenario. Understand it in this table. देखो, अगर मेरे पास ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है 2000 है, फर्दर बैड डेट 5000 है, टोटल एक्सपेंस बैड डेट से रिलेटेड कितना हुआ 7000 हुआ. नाउ टू encounter this 7000, I have created a PDD last year and it was not sufficient. तो ये 4000 मैंने यूज करा, तो 4000 यूज करने के बाद कितना बच गया बैड डेट, 3000 बच गया. तो वो 3000 कहां चले जाएगा, P&L के डेबिट साइड पे चले जाएगा. ओके, देन आई हैव क्रिएटेड 10000 का न्यू पीडीडी. It's given in the adjustment, you have to create 10,000 का new PDD, 10%. That I created, वो कहाँ जाएगा, वो भी तो current year के expense में से निकलेगा. तो net effect क्या आ रहा है 13,000. But we are showing it the cumulative. हम अलग अलग करके नहीं दिखा रहे. ठीक है guys, थोड़ा बहुत समझ आया ये चीज? Anyone? Have you understood this concept? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. इसमें ना एक चीज और है, इसमें इन्हें लेजर भी बोला है प्रिपेयर करने के लिए. सो आई विल डू दिस पार्ट अ लिटिल लेटर. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस. लेजर वाला पार्ट में बाद में करवाता हूं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द concept first. Ledger will not take much time. Okay, so let's take up another question. So please prepare a trial balance, small trial balance, and you can write case 2 for this. Additional information. Okay, so let's understand how this will be shown in financial statements. So we are not doing the journal entry for this question. We are not doing the ledger for this question. We'll first just simply understand if a big question comes and such kind of an adjustment is given, how we have to show this in profit and loss account and in balance sheet. Okay. So, so there is a bill of rupees 1200 which has been dishonored. So guys, you haven't done this chapter. आप लोगों के स्कूल में chapter करवाया नहीं है. This is a chapter by the name of bills of exchange. So when a debtor accepts a bill, so in the books of the business, a new asset comes up by the name of bill receivable, and the debtor is reduced or is cancelled by this amount. Okay. In future, if that bill is dishonored, तो ये bill यहाँ से हट जाता है, ये bill यहाँ से remove हो जाता है, और ये जो 1200 होता है, ये 1200 वापस debtor के अंदर add हो जाता है. So they are saying what? Debtors is 61,000. It includes a dishonored bill of 1200. मतलब ये जो 1200 है ना, ये 61,000 के अंदर already added है. ठीक है. सो मोहन ने एक बिल एक्सेप्ट करा था, ड्यू डेट पे मोहन ने वो पे नहीं करा, तो मोहन वापस बिजनेस का डेटर बन गया. वो बिल रिसीवेबल 0 हो गया है,
एंड मोहन वापस से डेटर बन गया है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50% ऑफ मोहन बिल इज इरिकवरेबल, मतलब अगर आप 1200 का हाफ कर दोगे 600 आपको नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, 600 इज योर फर्दर बैड debt, and this is given where in adjustment. Is this clear to everyone? So 3000 is your bad debt given in the trial balance. तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है ये तो ऑलरेडी 61,000 से माइनस है, बट ये 600 जो है ये यहां से माइनस, डेटा से माइनस नहीं हुआ है बिकॉज इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट. ओके, नाउ we'll use the same formula जो हमने यहां पर इस क्वेश्चन में करा था टू कैलकुलेट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा. So how do we do it? We first take the bad debt given in the Sir, trial. Hanji. this entire thing is case 2, no? This is case 2. Okay. Yeah. So bad debt given in the trial balance is 3000. Then we add further bad debt, that is 600. So I'm repeating again, ये 600 कैसे पता चला हमें? In the adjustment they have given half of the Mohan bill is irrecoverable. मोहन का बिल कितना है 1200, उसका 50% नहीं मिलने वाला. तो नहीं मिलने वाला मतलब मोहन इज अ डेटर, वो बैड हो गया. कहां पर गिवन है? एडजस्टमेंट में गिवन है. तो अगर एडजस्टमेंट में गिवन है, क्या 3000 के अंदर 600 इंक्लूड है? नहीं है, ऐड करा. सो एक्सपेंस related to bad debt which should go in your profit and loss account, it is 3600 till now. With this expense we will also add the expense related to provision for doubtful debt which will be created in the current year. How much provision for doubtful debt they are asking you to create in the current year? 10%. Okay, how do we calculate this? Debtors 61,000 minus further bad debt 600. देखो गाइस यहाँ पर भी सेम चीज लिखी थी, बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट 7,000 आया, फिर यहाँ पर डेटर्स हमने लिखा 1,05,000, उससे फर्दर बैड डेट माइनस करा. एग्जैक्टली सेम थिंग आई एम राइटिंग, कुछ भी डिफरेंस नहीं हो रहा फॉर्मूला के अंदर. ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? सर 6400. 59,400. सर 6400 नहीं होगा? पर 6400 होगा. ओके, अब गाइस एक चीज देखो, मैंने आप लोगों को ना क्लास में भी एक चीज बताया था. आई सेड जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो कौन से डेटर्स पे क्रिएट करते हैं? डाउटफुल डेटर्स पे. सो इन टोटल देयर आर 3 काइंड ऑफ डेटर्स. One debtors are known as good debtors. Good debtors are those जो 100% पे करेंगे. They will pay. They will pay for sure. We doubt ही नहीं है कि वो पे करेंगे. ठीक है. Then there are bad debts. Bad debts are 100% sure that they will not pay. वो bad हो चुके हैं. They are not going to pay us. तो जब वो पे नहीं कर सकते हमें, जब वो हमें पे ही नहीं करेंगे, 100% वो हमें पे नहीं करेंगे, तो मैं उनके ऊपर प्रोविजन थोड़ी बनाऊंगा. प्रोविजन क्या होता है? एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इन फ्यूचर दे माइट नॉट पे मी. बट बैड डेट क्या है? बैड डेट तो बोल रहा है कि हम पे ही नहीं करेंगे. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज योर डाउटफुल डेट. सो वी क्रिएट प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेटर्स only. Okay, now why have I introduced this concept? ये ना इस क्वेश्चन के अंदर एक implied meaning है. अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि half of the मोहन bill is irrecoverable, that means जो remaining half है वो मिलेगा ही मिलेगा ना. This is the implied meaning in this question. अगर मोहन का हाफ बिल जो है वो irrecoverable है, वो आपको मिलेगा नहीं, 100% it is clear कि वो मिलेगा नहीं, तो वो बैड डेट बन गया ना. यहां पर हमने लिख दिया
बट इसका implied मीनिंग क्या है? इसका implied मीनिंग है the remaining half, the remaining 50%, you will get it for sure. So if we are going to get it for sure, then that means they are good debts. वो मिला नहीं है पैसा, but वो good debt है, वो मिलेगा ही मिलेगा. तो अगर वो good debt है, क्या मैं उस पे प्रोविजन बना सकता हूं? नहीं बना सकता. ठीक है, हम good debtors पे कभी भी प्रोविजन नहीं बनाते. So that's why we have to subtract from here good debt, that is remainder half portion of his bill. ठीक है guys, अब कैलकुलेट करना कितना आएगा? So 59,800. ये आप सबको समझ आया? ये मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला एक ये आ रखा है, एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो आ रखा है. ठीक है, ये मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है. एंड स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक. हाउ डू दे मेक मिस्टेक? दे सबट्रैक्ट द फर्स्ट 600 वाला पार्ट एंड दे फॉरगेट टू सबट्रैक्ट दिस. तो उसकी वजह से फिर से बताऊं? हाँ. देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि मोहन का जो बिल है वो 1200 का है. ठीक है, वो 1200 जो है वो 61,000 का पार्ट है. इट्स ऑलरेडी एडेड. ओके, देन दे आर सेइंग कि इसका जो 50% है ना वो आपको नहीं मिलेगा. इट इज इरिकवरेबल. तो वो क्या हो गया? वो फर्दर बैड डेट हो गया. बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 50% नहीं मिल रहा ना, इट इज इम्प्लाइड दैट रिमेनिंग 50% यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर श्योर. तो अगर वो इम्प्लाइड है, अगर वो डेफिनेटली हमें मिलना ही मिलना है, तो मैं उस पर प्रोविजन थोड़ी बना सकता हूं, बिकॉज इट इज नाउ अ गुड डेट. इट इज नाउ अ गुड डेटर. वी कैन नॉट मेक प्रोविजन फॉर गुड डेटर. तो इसलिए वो जो रिमाइंडर 600 है, 1200 में से 600 तो बैड डेट हो गया, एंड जो रिमाइंडर 600 है हमें वो भी माइनस करना पड़ेगा व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग आवर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. गाइस आया समझिए? कार्तिक आया? यस सर. पर आ गया 600 ऐड नहीं करेंगे सॉरी, कहां पर ऐड करेंगे? तो, क्योंकि 600 तो हमको मिलेगा ही ना. 600 कंफर्म्ड है कि मिलेगा, इम्प्लाइड है. हाँ, तो तो फिर आप ऐड नहीं करना चाहिए. देखो पहले 61,000 के अंदर 1200 इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड है. Included है ना. Now in the question they Yes. are asking you to calculate 10%. That will be your provision for doubtful debt for the next year. Okay. So आप Yes, क्या sir. करोगे? आप doubtful debt निकालोगे. आप बोलोगे कि यार ये तो 600 तो बैड हो गया, तो इस पे प्रोविजन कैसे कैलकुलेट कर दूं? तो हटा दिया इसको. फिर आप बोल रहे हो कि ये जो 600 बैड हो गया, तो इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 600 100% मिलना ही मिलना है. तो उस पे भी डाउटफुल डेट कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो उसको भी हटा दिया. आया समझ भैया? Okay. Yes, sir. Okay, so now on this we will calculate 10%, which will come out to be 5980. अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा ये? कितना आएगा गाइस? So सर 9580. 9580. ठीक है. एंड ओल्ड प्रोविजन तो कोई दे नहीं रखी, ट्रायल बैलेंस में कोई ओल्ड पीडीडी तो दे नहीं रखा. So this is your expense related to bad debt. This is your expense related to new provision. Both of the expense will be added and they will be shown in profit and loss account on the debit side. Okay guys. So अब इसको कैसे दिखाएंगे? How we are going to present it in profit and loss account? How we are going to present this in balance sheet? So profit and loss account, on the debit side, we will write bad debt. First, we will take those bad debt given in the trial balance, 3,000. Then we will add further bad debt, 600. Then we will add new provision for doubtful debt, and that is 5980. So 9580. Okay, this is how we have to show it in profit and loss account.
And balance sheet, please remember, you have to subtract only two things. One is your further bad debt. One is your new provision. So debtors given in the trial balance were 61,000 minus further bad debt 600 minus new provision for doubtful debt 5980. So this will go in the outer column जो भी आ रहा है. ठीक है guys, तो अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. We have done everything exactly the same way we have done the first question. The only thing was यहाँ पर good debtors आ गए थे तो उनको माइनस करना था. Nothing else has been changed. Apart from this, एक चीज और रियलाइज करो, मैंने यहाँ पर 600 माइनस करा है. ठीक है, यहाँ पर हमने 6 और 6 1200 माइनस करा है प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए. तो ये 600 मैंने बैलेंस शीट में क्यों नहीं माइनस करा? Because that person has not yet paid us. We are saying yes, we are 100% sure कि अगर वो बोल रहे हैं कि मैं 50% रिकवरेबल नहीं है तो 50% तो मिलेगा ही मिलेगा. It is implied. मिला तो नहीं है, मिलेगा. So it will be part of your debtors only ना, the remainder 600. तो वो माइनस नहीं होगा. Any doubt guys? Concept समझ आ रहा है ये? This is the most difficult concept in this chapter. इसके अलावा बाकी सब कुछ हो जाएगा as you practice more and more question. But this is the most difficult part of this chapter. And separate question is been asked in school exams related to this topic. Because this topic again, you will find this in class 12th as well. And later on in your graduation if you do BCom. ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay, let's take up another easy question. And in that question as well, we are just going to do P&L and balance sheet. एक बार ही आप लोगों को P&L और बैलेंस शीट अच्छे से समझ आ जाएगा. Then again I will introduce वो जनरल एंट्री और लेजर वाला पार्ट जो मिस कर रहे हैं अभी. So case 3, please write case 3 and make a small trial balance. Okay, Karthik and Anvi, these type of question, have they done it in school? Not the previous one, but like the journal entries and the ledger. Journal Yes. entries and ledger has been done now. Yes, हाँ sir. जी. Okay, I'll take that up in the class. And Riya, आपके स्कूल में? सर अभी हमारा करा लिया है सर. अच्छा, okay. Guys, will it be possible for all of you to take another class tomorrow at same time? Online. No, sir. No, sir. हर चीज के लिए no बोलते हैं.